Jai Sachidanand, Los Angeles, 2004 Guru Purnima. We are on the second day picnic at this beautiful Atlantic Ocean beach, and here is Naresh Mehta. Jai Sachidanand, and we're going to start some satsang and stuff like that. I wanted to take this video shot before we started the Guru Purnima celebrations. Bye bye. बहुत जल्दी भावती हो અને ખાવાય બિલકુલ ખવાય એવી ના હોય અને પછી એવી સરસ બની હોય સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ એ તો અમને બહુ કઈ વાત આવડે Jai Sachidanand, Sanatan Dharma Temple, Los Angeles, Norwalk. આજથી બધા પ્રસંગો હવે અહીંયા લોસ એન્જલસ ગુરુ પૂર્ણિમાના આ હોલમાં આ મંદિરમાં ઉજવાય છે. તદ્દન બાજુમાં આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ટેમ્પલ પણ છે મંદિરને નેક્સ્ટ ડોર. સનાતન ધર્મ ટેમ્પલ ની અંદર બધી મૂર્તિઓનું भगवान परमात्मा की विजन के अंदर चलता था. आप समझे? आप हाँ उद्धव सिंह जी समझे ने? ऐसा ये शुद्धात्मा भगवान ये है मेरा नारायण स्वरूप प्रकाश, उसमें चलता रहेगा. एक प्रज्ञा कल सुनने आपको प्राउड होगी. समझ में आए ने? ये परमात्मा प्रकाश का एब्सोल्यूट नोइंग सीइंग पावर का सिडलिंग हो गया है. और आज जो था बाकी का लाइफ आसानी से निकल जाए इसके लिए 5 आज्ञा, 5 हम आपको जो इसेंशियल्स है लाइफ लेआउट कर लेने के लिए कि जिसके लिए कि डिवाइन लाइफ के प्रकाश में सारा दुकान खाली होती जावे और हमेरा ब्लीस इनफाइनाइट अनंत सुख खुला होता जावे. ज्ञान प्रकाश, दर्शन प्रकाश, नोइंग सीइंग पावर क्लियर होता जावे. We go on more knowing seeing and our bliss gets more and more open out. And whatever our stickiness and inside is there, it will go on getting more removed out. Right? तो उसके लिए 5 sentences है फंडामेंटल. वो समझा दे. मैं जरा बाहर जाके आता हूँ जरा बात होता है तो हाँ सेंटेंस में समझा देंगे आपको. मैं जाके आता हूँ वो जरा ध्यान से सुनिए और उसके हिसाब से आज सब घर पर जाएंगे तब जो समझाते हैं इस ढंग से करिए. और कल सारा दिन प्रोग्राम है, फिर से सत्संग करेंगे, हम डिटेल से समझाएंगे 5 फंडामेंटल वाक्य जिससे आपको इजी हो जाएगा. और आपको जैसे समझाएंगे इससे आपकी आज बहुत अच्छी आपकी समझ जाएगी, आपकी रात्रि अच्छी जाएगी, अच्छी बढ़िया नींद आएगी और उसमें इतना बीज है वो अच्छा क्राउड हो जाएगा और अनुभव ऊपर आ जाएगा. समझ में आया? तो आप आओ
बात करेंगे कल, और आपको पीछे हम मिलेंगे नहीं आपको, ऐसी बात है। इसलिए तो आज की ये बात समझिएगा, जरा देना होगा तो वो मांगेगी पैसा तो वो दुखी हो जाएगी। अब बाहर जाके दादाजी कहते हैं कि आप जोर जोर से चिल्ला के मेरी बैग रूप से मिला है, वो आज्ञा स्वरूप महीना आपको जो बीज मिला है, बीज अभी बोया गया है, वो अपने आप ओपन होता जाएगा, उसका आत्मा डिवाइन नोइंग सीइंग पावर ओपन हो जाएगा, उसकी इनफाइनाइट स्ट्रेंथ ओपन होती जाएगी, उसकी ब्लिसफुल नेचर आपको टेस्ट बढ़ती जाएगी। वो जैसी जैसी ये आज्ञा के हिसाब मुताबिक आपका जीवन जाएगा। तो पहली दो आज्ञा रिलेटिव रियल तो आपने सुन ली, तीसरी आज्ञा साहब ने व्यवस्थित, वो आज्ञा है, अनुभव आपको आज्ञा के स्वरूप में दिया, और वही आज्ञा आप आज्ञा के स्वरूप में रख के अनुभव स्वरूप आपका पक्का कर लो, अनुभव स्वरूप पक्का कर लो। महीना आपको आपकी हर एक डिस्चार्ज कर्म फल की स्थिति में मन, वाणी और काया की हर एक प्रकार की सारे वर्ल्ड में आपका सारा रिलेटिविटी का पूरा व्यवहार है, पूरा व्यवहार में जो कुछ बनेगा वहाँ वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जो अनुभव है आज्ञा प्रमाणानुसार रहेंगे, लेकिन फिर भी कर्म जो मन वचन काया का पार्ट है आपका कमाई वाला, वो खाली करने में आपको जागृति जरूर पड़ेगी, इसलिए वो चौथी आज्ञा है। तो तीसरी और चौथी आज्ञा वो ज्वाइंट है, दोनों साथ में है। तो चौथी आज्ञा ऐसी है कि जो कर्म बाकी है उसको फाइल बोलते हैं, ऋणानुबंध संबंध, ऋणानुबंध लेन देने के संबंध, लेना देना का हिसाब वाला संबंध, उसको दादा भगवान ने बुद्ध शब्द दिया है, और ये सभी महात्माओं के हाथ है फाइल, FILE। तो फाइल शब्द से बताया, तो फाइल बोले तो हम समझ जाते हैं, तो फाइल बोले तो हम उसको नंबरिंग देते हैं, अपनी सारा लाइफ और रिलेटिव लाइफ का सारा फाइलिंग कैबिनेट हम ऑर्गेनाइज करनी जरूर रहती है, सारा बिजनेस सब जगह, व्यवहार में सभी जगह, बहनों का, भाइयों का, सभी का ऑर्गेनाइज होता है। तो ये हमारी ये तो रियल है, डिवाइन लाइफ है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हमें समझ के लिए नंबरिंग अंदर समझ देना है कि भाई नंबर 1 2 3 4 5 देना है, तो नंबर 1 देना है किसको, नंबर 2 किसको, तो नजदीक के नंबर तो जो नजदीक के रिलेटिविटी उसको ही दिए जाएंगे। पीछे लंबे आएंगे, सामने बताया कि वो चोर आया, पॉप गया, तो उसको कौन सा है कि 420 नंबर की फाइल आई, समझे कि नहीं, कैसी आई, ऐसा नंबर है, और नजदीक की फाइल अलग है, एक नंबर की फाइल बहुत महत्व की फाइल है। वो दो आज्ञा तीसरी और व्यवस्थित शक्ति करता है। व्यूअरशिप, हम जो भ्रांति से मुक्ति पाई है, वो मुक्ति अभी एको के स्वरूप में हमें अंदर हमारे कर्म फल के कोर्सेज में हमें ऐसा महसूस बनेगा कि मुझे बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसा बनता रहेगा। लेकिन ये आज्ञा के हिसाब से आपको रहेगा कि मुझे बना है, लेकिन मेरी अकाउंटेबिलिटी है, वो व्यवस्थित शक्ति के मुताबिक मेरे हिसाब वाला है, उसी में मैं किसी को दोषित न देखता, लेकिन मेरे हिसाब का फल आया है, वो फल का परिणाम ये में भुगतान है, और भुगतान सफरिंग जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जैसी है अंदर से, और बाहर से व्यवहार में जैसा कुछ रहना है वो ले लेता हूँ। और तो क्या है, जैसा ड्रामा में जो पार्ट है, तो जैसा साहब ने बताया कि उसमें कि भाई चलो कि जो नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, पीछे घर में जाओ तो वाइफ को भारी मुंह से नहीं जाना है, तो अच्छा मुंह से जाना, और बोलना कि अच्छा रसोई बना दो, तो वाइफ खुश हो जाती, चलो काम बन गया आज। तो रसोई क्यों बनाना, क्यों रास्ते में जाते अपना मन अपने को तंग करेगा, क्योंकि मन अभी अपना है, किसका है, शुद्धात्मा का है ना, बोलो ना जॉर्ज, कि जॉर्ज का, शुद्धात्मा का मन, जॉर्ज का नहीं, माइंड किसका, माइंड मीन्स हुज, My body. Huh? My body. Whose body?
George Scott. You don't know George? हाँ, तो मन छोड़ेगा Now, खुद मेरे वो खुद की अर्निंग है, वो खुद की एसेट अर्न की हुई है. Is getting dispersed out, is getting dispensed with, or naturally that too. But nobody knows that, and there lies the beauty and the whole this all revolving and roaming about in the life. You understand? तो मन खुद खुद ही करेगा कि जॉर्ज ये तो बता दिया कि ऐसा हो गया, लेकिन अभी कल पेमेंट देने को आएंगे, क्या करेगा? पेमेंट करना है, बिल भरना है, क्या करेगा? तो इसलिए जाके घर पर जाके फाइव को बोलना, अरे अच्छा फर्स्ट क्लास आज बना दे, डिनर अच्छा बना. excuse me, one means it is Huh? a feeling and emotion. हाँ? It's a feeling and emotion. हाँ. It makes the person to think in that way. हाँ. That's why he was trying to deal with his wife or some. No, that is how. So वाइफ को ऐसा नहीं लगे कि ऐसा भारी मुंह करके आते हैं तो कुछ बुरा हुआ है, तो वो भी हैरान हो जाएगी अननेसेसरली. अपना एक तो काम बिगड़ा तो दूसरा वहाँ तो सारा एटमॉस्फेयर बिगड़ जाएगा. एक तो मन तंग करता है तो नींद भी नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी, और वाइफ अच्छी रसोई नहीं बनेगी, उनसे मजा आएगी उसमें. तो अच्छे जाओ सीधा. तो बाहर का व्यवहार है, तो व्यवहार तो जिस ढंग से करना है तो उसको पहले बोल दो, ये देखा जाएगा आगे. एकदम व्यवस्थित तो हो गया, चलो व्यवस्थित है. हमें पिक पॉकेट को ऐसा नहीं माना तो छोड़ गया. His instrument in the scheme of the nature, जो साइंटिफिक एविडेंस है, वो तो मेरा अगला हिसाब है. तो हमें हमसे किसी का पैसा लिया गया होगा, कटा होगा तो अपना जो है बन जाता है. इट इज नॉट कि ये आदमी और ये आदमी, ऐसा कुछ हिसाब नहीं है उसमें. इट इज नॉट लाइक दैट. यू अंडरस्टैंड? ये तो सब इंट्रिकेसी है सब करने की. यू अंडरस्टैंड? सो अच्छा खाना खा के ज्यादा खाओ, सो जाते हो मन सबसाइड हो जाता है, शांत हो जाता है, आराम से नींद आती है, तो मजा आता है. तो अपना वो जो सेटलिंग है ना, तो पीछे उसको स्कोप अच्छा मिलता है, उसका होता है, तो अपना नोइंग पावर थोड़ा ओपन होता है. तो सी तो राइट इन द मॉर्निंग यू गेट अप जो भी बताएंगे ऐसा करते रहेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो ऐसा बनता रहता है. आते हैं तो घर में बैठ जाते हैं और ऐसे पाठ करने को बैठ जाते हैं. हमें कि सेपरेशन किया, वो प्रयोग आप खुद कर लेते हैं, रोज में दिया है, बताएंगे रोज करने के लिए. तो करने को बैठते हैं तो उसमें तो बाहर से टकरा मारता है, कौन है, तो पुलिस आता है, तो ये है तो आपने कंप्लेन की थी, तो हम तो दूर निकालते, हम तो जानते हैं, लेकिन वो कैसा भी करके बहुत मेहनत की तो ये मिला, तो हमको डाउट गया, मिला, नहीं मानता था, उसको थोड़ा देना पड़ा, माना, और उसमें 800 ने $60 बचा. क्या करें, तो रात में खलास कर दिया, बस वापर दिया लो. तो कोई बात नहीं. तो 2000 गया बैंक अकाउंट क्रेडिट व्यवस्थित, अपना डेबिट अगेन क्रेडिट डेबिट ऐसा कर देगा, लेकिन बॉदरेशन नहीं रहेगा आपको. जो मगज पर बॉदरेशन हो के जो तंग होते थे और नया जमा होता था, वो नहीं होता रहेगा. समझ आया? दैट इज द वे. इट्स अ ड्रामेटिक वे ऑफ व्यवहार, रिलेटिव लिविंग that will start now as per this ajna. You understand? Understanding lies inside, externally dramatic, relatively living wise. That is how व्यवस्थित आज्ञा में आप रह जाएंगे. और चौथी आज्ञा है जो फाइले है, उसका संभाव से निकाल करते जाएंगे. संभाव मीन्स विथ इक्वानिमिटी. किसी की वो ब्राइब मत लो, किसी को पैसा भी करके सब निकाल कर दो, किसी के साथ अपना रेंज नहीं हो गई, ऐसा नहीं हो, ये सब तो निपटा देने के बाद तो जितना जितना अकाउंट सेटल होता है और क्रेडिट और डेबिट इक्वल होती है, ये अकाउंट क्लियर होता जाता है. लेकिन नजदीक के अकाउंट ठीक ही होते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं, तो आस्ते आस्ते उसमें कम हो जाता है और एक दूसरे को अपनी अच्छी असर होती है. और घर में भी एटमॉस्फेयर अच्छा बनता रहता है. घर में डिवाइन और सब पॉजिटिविटी वाला एटमॉस्फेयर बनता है. समझ में आया? वो इनसाइड लिविंग है ना साहब, तो साइंटिफिक है.
यू अंडरस्टैंड? फोर्थ, तो फाइल का समझा निकाल, तो फाइल बोले ने वो कर्म बोलते हैं वो, आपको निकाल वो सब खत्म करना है, और जितनी सब फाइल खत्म हो गई तो पूरा इनफाइनाइट ब्लिस तो ओपन हो जाएगा, एब्सोल्यूट नोइंग सीइंग पावर ओपन जाएगा, दैट विल बी द फाइनल बॉडी। एंड फाइनल बॉडी में एब्सोल्यूट अपना नोइंग सीइंग पावर होते ही, फाइनल बॉडी का लाइफ टर्न होते ही you will be absolute bliss. Then you have no birth again. Wonderful, where all the liberated souls are there. You are one of them. Same, each and every soul with infinite bliss, same infinity, same qualities. That is beauty. Everybody individual experience is there. That is the beauty of it. Experience does not merge with the whole. Part does not merge with the whole. No. It's not like that. It is individual experience. But it is the same experience all through, because attributes of all pure soul are same. You understand? Huh? Just like two ignited. So divine kahiye. Globes. Ignited or Flame stones. Huh? If you bring together, they will appear one only. It will larger but one only. But actually wicks are different, containers are different, contents are different, and both are ignited differently. Though lighted flames merge together in this one, it is not like that there, no. There is independent experience. Simply. Infinite soul, liberated soul. Amongst them, we get there. See, from there, there are only pure liberated souls and space. Just in the infinite bliss. Infinite bliss is the ultimate experience. And it starts here now, it has already started. समझेंगे? तो इसे संभव निकाल करना है, व्यवस्थित की शक्ति की हिसाब से है सब, वो ख्याल में रख के इंसाइड अंडरस्टैंडिंग करके ये सारी फाइल निकाल कर देना है। तो जितनी जितनी फाइल कमती होती जाएगी उतना यू विल फील लाइटर एंड लाइटर एंड योर लाइफ विल बी ओपनिंग आउट, और आपका कवरिंग कम तो हो जाएंगे बीच में वाले जो द्रव्य हम बोलते हैं ना, वो नॉलेज कवरिंग कवर, विजन कवर, वो कवर कमती होते जाएंगे, they will become more and more thinner. They are like layers into one. You understand? Then our powers that has opened up, going, seeing power, then other powers, that covering, that obstacles to get lesson and lesson. You see? And our bliss, experience, taste goes on getting increasing. That's all the experience out of this Ajna living. Ajna living. You follow? The 4 Ajnas. First 2 Ajnas, relative viewpoint first, number 1. Second, relative viewpoint by pure soul, number 2. व्यवस्थित शक्ति करता है, scientific circumstance evidence is the doer. Pure soul is the non-doer, or was, is and always is. All doership is attributed on account of that, and it is functioning universally for all the living forms through Mother Nature. This is beauty. Everybody, we as fine, every individual as a fine is part and parcel of the whole scheme, grand scheme. You understand? You follow, no? That is how it is. Whole thing is working jointly with interconnected relations. So 5. Number 1 is what? Closest is number 1, जो एकदम नजदीक है. कौन सी नजदीक है? तो मन वचन काया. वाइफ है, लेकिन वो तो कोई अपने पसंद नहीं, टाइम दिमाग अच्छा नहीं है तो बोलते कि मेरा सर मत खा, मुझे अकेला छोड़ थोड़ा सा ये, तो बोलते चलो उसका दिमाग ठीक नहीं है तो हम छोड़ो उसको आगे, ऐसा ही बोलेंगे, दूर रहेगी. लेकिन अपना मन में उल्टा सुल्टा बनेगा तो कौन कहाँ रखेंगे आप? वो तो बनेगा, वो तो इट इज गोइंग ऑन गेटिंग डिस्चार्ज आउट. यू फॉलो रोहित? दैट इज द क्लोजेस्ट. यू हैव टू लिव, यू कैन नॉट पुट इट असाइड. Number 1. Life is legally, of course, number 2.
तो कायदेसर है ना, और नो तो नहीं है, तो क्या नंबर 2 देना ही पड़ता है। कोई बोलते पेरेंट्स को दे, दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स रहे, अभी तो वाइफ बनी ना तो वाइफ पीछे पेरेंट्स आए, पीछे बच्चे आए, नजदीक के रिश्तेदार आए, वो सब तो है। तो सारे रिलेशंस के कितने 5, 50, 100, 200 और कितना जिसके जिसके जिससे रिलेशन हो, और बाकी की तो लंबी लंबी फाइल होती है। तो फाइल इतनी छोटी, इतने स्मॉल अकाउंटेबिलिटी के लिए, नॉट नोइंग दिस, अपनी सच्चे वैल्यूएबल लाइफ वी लूज आउट। सारा वर्ल्ड का लिए तो उन्हें कुछ है ही नहीं ना। लुक हियर, यू अंडरस्टैंड? उसके बाहर एक कुछ बनने वाला नहीं है, आप करते जाओ। यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये करो और वो ना करो, सारा डूअरशिप से निकाल दिए, व्यवस्थित के हिसाब से बनने ही वाला है। यू अंडरस्टैंड? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, संयोगी पुरावे, वो पुरावे कुदरत के हिसाब से इकट्ठे होते जाएंगे। कर्म फल अपना उदय में आना है, पीछे बिखरते जाएंगे। टाइम जो रहना है इस टाइम रह के ऐसा करता है। तो फाइल का सब निकाल कर देना है, नंबर 1, 2 ऐसे सब फाइल। तो क्या, तो घर की फाइल उसको सब संभालना है सबको। तो घर का अपना टेम्पल हो जाता है। वो रिलेटिवली हम जाते हैं मंदिर में, ठीक है, लेकिन घर ही अच्छा हो गया है, किसी को आनंद नहीं हुआ। बोलो ना, I didn't understand the last part. our home will be temple. Yeah, I understood that. Temple we go according to our ritual. We worship at home also. We do whatever Anand is going ritually doing all these things. There is no bar to in that. You understand? There is a dramatic whole display. What is it? Even it is a dramatic, but everybody believes it to be real. There is only difference. Is it not so? Everybody. And that is the puzzle. Puzzle is that. You see? That is how Dada Bhagwan said, and that is how this Akal Vignan says, the world is the puzzle itself. There are two viewpoints to solve this puzzle. One relative viewpoint and the real viewpoint. So unless there is real viewpoint, this puzzle cannot be solved. Either आप रिलेटिव व्यू पॉइंट से करने जाते हो तो डूअरशिप से करना पड़ेगा, रियल व्यू पॉइंट में जाते हो तो ये बाजू टिल्ट हो जाते हो। समझ में आता है? अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ बनता रहेगा। तो 4 आज्ञा फंडामेंटल सेंटेंस दिए इन दैट बुक आई हैव गिवन, आई एम टेलिंग यू लेटर ऑन। Do you understand 4 sentences? Relative viewpoint I am Anand, by real viewpoint I am pure soul. Vyavasthi Shakti is the doer, that is scientific circumstance evidential. Vyavasthi Shakti, that power is that cosmic supreme power is the doer, universal doer. That is the power through which whole universal is active. Real, no? All living. You understand? And file on a sambhadika means all files to be settled out with equanimity. You understand? Files means accountability. You understand? And that has to be numbered. Anand is number 1. Wife is there? No. When wife will be there, will be number 2. Till then, parents. Naturally. The brother, sister, all their uncle, this, everybody. Right or not? दादा दादी सब कुछ समझ गए। और लास्ट आज्ञा, till today all our accounts, हमारे व्यवहार के अकाउंट से चला नाम पर सब चला, तो नाम का अकाउंट तो ऐसा है, तो आखिर जाने के टाइम वो यहाँ ही रहता है और हम चले जाते हैं। अलेक्जेंडर भी गया, साथ में कुछ नहीं ले गया और बोल बताया कि मेरे हाथ बाहर रखो, देखो मैं कुछ नहीं ले जाता, और मैं जो बुरा किया कर्म
सबको मारा लूटा, वो मेरा नेगेटिविटी में ले जाता हूँ और ये सब मुख पे रखे जाता हूँ। तो ऐसी फुलिशनेस मत करो कभी, ऐसा वो लेसन वो सब बोलते हैं, वो तो बोलेगा वो क्या बड़ा आदमी है, कौन सुनता है, वर्ल्ड ऐसे है, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ तो अपना नाम पर का सब व्यवहार यहाँ ही रहता है और वो व्यवस्थित का हिसाब का है पूरा आगे ही। It does not mean that we are careless. No, 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 no. Do you understand? But from today on, कौन सा अकाउंट था? शुद्धात्मा का। अगर शुद्धात्मा का अकाउंट आज से चालू हो गया है और सारी अकाउंट बुक शुद्धात्मा की ओपन हुई है, डिवाइन एंड परपेचुअल एंड इनफाइनाइट ट्रेजर, कुबेर, समझा ना? यू अंडरस्टैंड? तो अपनी इनफाइनाइट क्वालिटीज ओपन होती जाएंगी एंड यू योरसेल्फ विल हैव टेस्ट ऑफ दैट बाय लिविंग आउट रिलेटिव लाइफ। जो व्यवहार की जीवन सब चली जाएगी और अपना अंदर का खजाना खुद का मजा आती जाएगी, कोई लूट नहीं पाता उसको, सिक्योर है, फुल सिक्योर, उसमें कुछ समझे ना? तो आज से ये अकाउंट चालू हो गया तो इस शुद्धात्मा के अकाउंट अखा आपका इट विल गो ऑन गेटिंग मोर एंड मोर in increase, more and every day as you go on living out your life, कैसी 5 आज्ञा के मुताबिक कैसा जीवन जाएगा तो इसलिए अकाउंट बनता जाएगा। समझ में आए ना? वहाँ थोड़ी स्नैप आएगी आज्ञा के धर्म में कुछ भी बन सकता है तो करेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो करेक्शन कौन करेगा? तो 1 नंबर की फाइल करेगी। शुद्धात्मा को करेक्शन नहीं होता कभी भी, इट्स प्योर इज प्योर। डू यू अंडरस्टैंड? सो आनंद विल करेक्ट whatever where he has faulted in Agnya and correct himself and put in the right course. In space correction नहीं करते यहाँ बैठ के, ऐसे करना है यहाँ, उसके लिए स्पेस में कहाँ जाना है? You understand, John? Anand, do you understand? This is how in this body you can have universal experience. Do you understand? એ પિંડમાં બ્રહ્માંડનો અનુભવ થઈ શકે આવી રીતે, એના માટે બહાર ભટકવાની જરૂર નથી ને બહાર સમજાયું ને? એટલે 5મી આજ્ઞા શુદ્ધાત્માનો ચોપડો, એની કાળજી રાખવાની। શુદ્ધાત્માના કાળજી માટે આજે બતાવીએ છીએ તે ડેઈલી, ધીસ ઇઝ નોટ એ રિચ્યુઅલ, પણ આ તમને એક્સપેરિમેન્ટથી તમારું સેપરેશન થયું, જે સેલ્ફ અને નોન સેલ્ફ, પ્યોર શુદ્ધાત્મા સેલ્ફ અને નોન સેલ્ફ એટલે રિલેટિવ બોડી સેલ્ફ, ફાઇલ નંબર 1, એ બેનું સેપરેશન થઈ ગયું અને વચ્ચેનો બાઇન્ડિંગ ફોર્સ આખો રોંગ બિલીફ આખી ફ્રેક્ચર થઈ ગઈ, રાઇટ બિલીફ સેટઅપ થઈ ગઈ છે। સો it will open out and with that consciousness, pure soul consciousness, whole life will go on. એના ભાન સાથે તમારું આવું બધું જીવન ચાલ્યા કરશે। हाँ, सभानता से, शुद्धात्मा की सभानता से सारा व्यवहार जीवन चला जाएगा। वो कृष्ण भगवान का ऐसा ही जीवन था, परमात्मा योग का, तो वासुदेव के हिसाब से थे भगवान का, लेकिन जीवन तो परमात्मा योग से था। लाइफ गई तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, जीसस की ऑर्डिनरी, लेकिन विजन वाइज डिफरेंटली, एग्जैक्ट सन ऑफ द गॉड, God himself cannot come. That is what they say, beyond reach. आनंद, yes. समझे ने? हाँ तो ये बाल भाषा છે। For graders to come up, they have got to be educated. કે આ પ્રમાણે શિક્ષણ આપવું પડે છે। એટલે આવતા પછી આ તો કોલેજ સમજો જ નહીં, આવું છે। સમજો? 5 આજ્ઞા પૂરી થઈ સાહેબ, થઈ ગઈ? પુસ્તકમાંથી આ પકડો, હવે તમને આ મેં પ્રયોગ કર્યો કે સેપરેશન વાળું છે ને, યુ ટેક આઉટ યોર બુક ઇન ઇંગ્લિશ પેજ નંબર 8, ઇન હિન્દી પેજ નંબર 24, ઇન ગુજરાતી પેજ નંબર 33। બધા સાંભળ્યું? गुजराती पेज 33, इंग्लिश पेज 8, हिंदी पेज 24। बताए काढ़्यू? बोलो ने? नाउ હું ગુજરાતી પહેલું વાંચું છું,
પછી હિન્દી અને પછી ઇંગ્લિશ પર જઈશ. તો ગુજરાતીમાં છે હમણાં પ્રયોગ કર્યો તો એ બધા પ્રયોગ જેવું જ છે. આ તે આ તમારા હાથમાં આવ્યું છે. ઇટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ. એ રોજ તમે આ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ ને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ આજે બીજ સ્વરૂપ છે એ પ્રેક્ટિસ થાય ને નેચરલ થઈ જાય તમારે આજ્ઞા અને ઓટોમેટિકલી ઇટ શુડ રિમેન વિથ યુ. એના માટે રોજ વન્સ ઇન એ ડે ફાઇન્ડ સરસ ટાઈમ કરી કાઢજો રેગ્યુલરલી. એ ટાઈમે it will take 15-20 minutes. Go through all that vidhi. It is about running 10-12 pages. That's all. હું બે ત્રણ વાક્યો બોલી જાઉં છું, સાંભળજો ગુજરાતીમાં. Then I will come to English and Hindi. Wait. ગુજરાતીમાં શું એનું હેડિંગ છે જુઓ. જ્ઞાન સાક્ષાત્કાર પામેલા માટેની નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ. શું બોલો? એટલે કે આ તમને આ સેપરેશન સેલ્ફ રિલેશન થયેલું છે તેના માટેનું તમને નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ. નિશ્ચય એટલે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, વ્યવહાર એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ. એટલે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી અંદર આપણે રહેવાનું અને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી આ પ્રજ્ઞા રોજ તેના એક્ઝેક્ટ ફિક્સ ટાઈમે એ બોલશે વિધિ અને એનું રાખશે. આટલું જ કામ. આ રિચ્યુઅલ નથી, આ તમારો પોતાનો આખો સ્વાધ્યાયી લક્ષી આખો સ્વ પુરુષાર્થ છે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ આનંદ? પ્રજ્ઞા તમે બધા સમજાયું ગુજરાતીમાં? આ સમજો. આ બહુ અગત્યનું આપીએ છીએ. સમજાયું ને? આ બહુ સમજજો. હા સર સમજે કે નહીં? બોલ. સમજાયું? નિશ્ચય વ્યવહાર. નિશ્ચય એટલે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, વ્યવહાર એટલે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ. હવે બે વાક્ય તમે બોલી જઉં છું, પછી બીજું બધું તમે જોઈ લેજો. દાદા ભગવાનને ત્રિકાર નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. બોલો. હે નિરાગી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સહજાનંદી અનંત જ્ઞાની અનંતદર્શી ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ પરમ જ્યોતિ સુખધામ એવા હે વિતરાગી પરમાત્મા, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. વાક્ય 3 વખત બોલ્યો કારણ કે ત્યાં બ્રેકેટ 3 વખત લખ્યું છે. ઇટ ઇઝ બ્રેકેટેડ 3 times. George, you understand? તમે all of you Hindi also, Gujarati also. એટલે જે વાક્ય પાછળ whatever number bracketed, that વાક્ય that number times. Rest you go through. Rest you go through like that. In the further up, મને આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો. આ તમે વિધિ બોલો છો ને તો દાદા ભગવાનને બોલો છો. એ દાદા ભગવાન એટલે આજે તમે અમને જ્ઞાની પુરુષ અમારા મારફતે જ્ઞાન મળ્યું છે એટલે અમારો જે અંદરનો અનુભવ છે એ દાદા ભગવાન સ્વરૂપ અનુભવ એ રીતે છે. ફિઝિકલ બોડી એ તો એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. એટલે તમારા વિઝિબિલિટીમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. એટલે વિઝિબિલિટીના આધારે તમે દાદા ભગવાનને અનુલક્ષીને બાય રિફરિંગ ધેટ તમે કરો છો. એટલે તમે એનાથી તમારું શુદ્ધાત્મા પદ તમારું એના માટે મનને થતી જાય છે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ધેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. હવે એમાં પછી સમજમાં ગ્રેજ્યુઅલી તમારે શું થશે કે દાદા ભગવાનને બોલો છો એની જગ્યાએ તમારે શુદ્ધાત્મા ભગવાન દાદા ભગવાન એવી રીતે કરશો એટલે આપણી અંદર પ્રગટ થયા છીએ શુદ્ધાત્મા ભગવાન દાદા ભગવાન. જોર્જ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? હું શુદ્ધ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું કહીએ ને, શુદ્ધાત્મા બધું જ આવી જાય છે. એ રીતે વાત છે. હવે સમજાયું? ધીસ ઇઝ હાઉ. એટલે આ રિલેટિવ ફાઇલ નંબર 1 આ રિયલ અંદર ભગવાન આગળ આપણે આ વિધિ કરે છે અને આપણું જ પોતાનું એ બને છે. એટલે રિલેટિવ ફાઇલ નંબર 1 આજે એઝ એ ડિસાઇપલ બિફોર ધી સુપ્રીમ બીઇંગ, બિફોર હિમ વિધિન that is opened out through the medium of Jnani Purush as his resort, divine resort,
through his divine grace he has achieved this as a gratitude. બહુ સુંદર ઉપકાર, સમજાયું ને? એ રીતે તમે બોલો છો ડેઈલી, તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ? આવી રીતે કરવાનું છે. એટલે આગળનું વાક્ય, મને આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો. એટલે ફિઝિકલ બોડી છે એટલે શક્તિનો સ્ત્રોત અમારે તો અનુભવનો છે, એટલે ઇટ ઇઝ માય એક્સપિરિયન્સ. સો તમે માગો એટલે રિલેટિવ તમારું છે, તે શક્તિ માગે એટલે રિલેટિવ becomes with humility. એને શું કહે છે? નમ્ર થાય છે એને શું કહે? Relative becomes more and more humble by praying for powers. Powers from whom? Where the source is there. Which source? That Pragat Jnani, their source. And then on, further on, તમારા પોતાનો ઇન્ટરનલ શુદ્ધાત્માનો સોર્સ ઓપન થતો જાય છે. હવે સમજાયું? જેટલો સોર્સ ઓપન થયો એટલી તમારી હેલ્થ થઈ. એ હેલ્થને કારણે તમે ફર્ધર તમારું રિલેટિવ એક નંબરની ફાઇલના ડિસિપલ સ્ટેટથી તમે રિયલ શુદ્ધાત્મા આગળ, એ એમના દાદા ભગવાનના સ્ટેટ આગળ તમે પોતે જ કરી શકશો. એ તમારો અનુભવ ખુલ્લો થતો જશે. આ બધા સમજાયો કે નહીં? બસ એ રીતે go through all these things. અને when you complete all these things, 5, 6, 7 or 8 pages, at the end 5 fundamental sentences are printed there. એટલે તમને you may not remember, so you can keep that in view. You understand? Panch Agnya. That means all the 5 sentences. Number 1, relative viewpoint to Chandulal Ju. It's for example. So everybody, you put your own name. Anand, samjhayo? By relative viewpoint, I am George, I am Chandulal, I am Pragya. Samjhayo nahi? Rohit? Yeah. Bada samjhayo ne? By relative viewpoint. સમજાયું બધાને? હા, એ પહેલી આજ્ઞા. બીજી, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ હું શુદ્ધ આત્મા છું દરેક. ત્રીજી, જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ. શું કહ્યું? George, you found out? Huh? Huh? No, at the end, whole thing will at the end of that. No, when we are over all those pages, which I told you just now. Yeah, 8. Page 19. There are 5 sentences printed there. Are they not? Page 19. 49. Page 19. One line. Yeah, got it. 5 sentences are there, no? Relative pointer. What name is given is example. So you put your name. You understand? Then third is Jagat Niyanta Vyavasthit Shakti. Jagat Niyanta means controller, as a doer. कई व्यवस्थित शक्ति, scientific circumstantial evidence power, cosmic power है. So Jagat means what? That means whole world and all universal all. And world means what? Unless George is there as George, where is the world for George outside? If George is not there, is there any world? When George is not there, unless George is there, there is no world. George છે તો દુનિયા છે. આ પ્રજ્ઞા છે તો દુનિયા છે. પ્રજ્ઞા જ નથી તો દુનિયા ક્યાં છે? કહો. You understand, આનંદ? If આનંદ છે તો દુનિયા છે, વર્લ્ડ છે. આનંદ નથી તો વર્લ્ડ ક્યાં છે? બતાવો. આનંદ જ નથી એક્ઝિસ્ટિંગ તો છે વર્લ્ડ. યુ જ એક્ઝિસ્ટ નથી તો ક્યાં વર્લ્ડ? યુ બોલો. એનો મિનિંગ એવો નથી કે એક્ઝિસ્ટન્ટ વર્લ્ડ નથી. એ તો બધી છે જ કનેક્ટિવિટી ઓલ અરાઉન્ડ. પણ હાઉ વર્લ્ડ ઇઝ એનું એક્સપ્લેનેશન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બેઝિક. ધ વેરી વર્લ્ડ રિલેશન એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બેઝિક એ 1 નંબરના ફાઇલ ઉપર છે. 1 નંબરની ફાઇલ પોતે જ આખું વર્લ્ડ છે. ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. George, understand or no? And Jagat, Jagat, mind you, that is word. સાહેબ આપણા વડીલો સમજાવે છે. જગત એટલે જ means the incoming and Gat means outgoing. That is very
that the perpetual nature of which is incoming and going out, continuously filling and emptying out. That is the nature of the Jagat. Is it, sir? Yes. Filling and emptying out. You drink water and it empties out. Is it so? Or it remains? You eat food and it empties, it goes out. Is it so? Or it remains? If it were to remain, then if all these number 1 5, mind, speech and body were to remain like that without getting discharged out, what would be the condition of the whole world? Stinking and all that. What Mother Nature, how beautiful it is. Anand say, how beautiful it is. Huh? It's nice. It's a process, natural process. Trees and all, but that no khali thaya કરે છે. You understand? પણ અંધારામાં ખાલી થાય અને લાઇટમાં થાય એમાં ફેર ખરો કે નહીં? You are speaking, George, and you have to give to someone money. But in this speaking, because you are under the pressure, you say, "Oh, David, oh, I know I have to give you $5,000. I will give you $5,000, David. I will give you. You go on lottering, and fortunately, David is there. Just he is in your house, and you are sleeping hard, and you are snoring, and you are speaking. And David is there, and he speaks. He listens, and he would be very pleasant. So, oh, this George fellow is not giving my money since long. Sometimes money comes with him, and yet he is not giving. What sort of fellow he is? He says, nice thing. So he just relishes. तो चला जाता है, आनंद हो जाता है, मुझे पैसा मिलेगा. तो पीछे आता है, George, so nice, huh? I will give you. So I thought, come on now, let one day pass. So I have come today. Please, मेरा 5,000. Give me that. You are telling me I will give you. I was telling you when. तो ऐसा बोलेगा. You was speaking when I was speaking. It is like that. You see? अंधारा, snoring, no. जागता बोलेगा तो उसका वैल्यू है. Light, आनंद, you understand? So all these karmas are संभाल निकाल real viewpoint की vision में filter out होते जाएंगे. Then and then with clarity, all that discharge goes on cleared out completely, and that is how we get cleared out, and body gets cleansed up and becomes natural. Body कुदरती बनता है तो स्वभाव से कुदरती, लेकिन आज मनुष्य लोग कुदरती जीवन नहीं जी पाते. Is it true, George? Anand, is it true? I understand. You're saying this. Human beings cannot live natural life. They live unnatural life. Do you understand that or no? Not really. Not really. We try to live natural lives. Every moment you interfere with nature, where do you not interfere? Can tell me. I am Anand. How is Anand? Anand is subject to living as per the scientific circumstances and evidences. How could you be Anand as I am Anand? Tell me. Oh, no, you good educator, you doctor, you are real doctor then. But who denies that you are not a doctor? And where is to be that you won't rather work as a doctor efficiently? It will be. But your efficient work will be only when you will be dissociated as Anand. Do you follow? Or no? From the greed. Oh. Now you are free. Your eye is free now. I am pure soul. You are not with my. This is my body, and my name is Anand. Is dramatically you are speaking now.
George, is it not so? Is it for cheating? Who will get cheated? How long? Tell me. કેટલું કરશે? કોઈ મારશે થપ્પડ. Life is life a drama. Why should you say Russ? But now it is drama. Though even then it is drama, but nobody knows. These writers, poets, Shakespeare, they write, but who has believed that? Everyone has this question: to be or not to be? Why? What sort of thing? Anand. પાંચ આજ્ઞાની બીજી છે ત્યાં સમજાયું ને? તો આ તમે જોઈ લેજો ને પાંચ આજ્ઞા તો ફાઇલોનો સંભાળ નિકાલ જગત નિયંતા એટલે જગત means this, that is how you are, and you will experience yourself. So this ajna as ajna wise will be your experience wise, gradually. Do you understand? That will open out your independency, right, with you in your own nature. You are already independent now, free, but the taste of freedom will open out more and more. Do you understand? That is how. Philo Sambha Nikal, 3 and 4 together. And resultant, શુદ્ધાત્મા ચોપડામાં રકમ જમા કરવી in the sense કે it gets left that way. That means now આપણે શુદ્ધાત્માએ દ્રષ્ટિ તરીકે બહુ કાળજીપૂર્વક શુદ્ધાત્માની કાળજી પ્રમાણે જીવન જીવીએ છીએ. We live out our life with real pure soul reason wise living, relative living. Do you understand? The care, alertness. Do you understand, Anand? Jagruti. You know? That is exact thing. Because this is relative and I am real. Exact. Awareness. Huh? Exact. That is how, on relative side, it goes on getting settled out. On real side, it goes on getting credited out more and more and opening out energy and your testing and all this things. Siddhartha so. સમજાયું બધાને? ચાલો, બધું થઈ ગયું? ઓકે? હવે તમે રાત્રે જાઓ, when you go home, as you go to bed, when you are in the bed, just at the time of going to the bed and in the bed, at the time of the sleep, તમે આંખો બંધ કરીને close your eyes and તમે બોલેલું સાંભળી શકો. What you recite, you can nicely listen yourself only, so that others are not disturbed. Oh, Shuddhatma, I am pure soul, मैं Shuddhatma हूँ, इस ढंग से ऐसा you go on chanting your own divine sentence. ચાલ્યા કરો, મંત્ર રટ્યા કરો. Follow? And since in a regular sleep time, during this chanting, at that time, you are on it. In 5, 10, 15, 30, 10 times chantings, body will fall asleep and the chanting will go on throughout the night. And the seedling today, that is song of the pure soul, as with absolute knowing, seeing power, for that absolute and knowing power to get open out from this seed state. You follow? Yeah. From dark moon to the first phase, as today, it will be second phase right in the morning tomorrow by getting nursed out properly, automatically without effort, effortlessly. Your sleep will not be wasted, which normally waste हो जाती है. अच्छी नींद आई नहीं आई ये सब होते हैं. तो स्लीप की जगह नींद आएगी शरीर को और अपन हम जागृत रहेंगे. कृष्ण भगवान ऐसे थे. वासुदेव निद्रा लेते थे और वो जागृत होते थे हमेशा. समझे साहब? आनंद समझे? और वो Vasudev was sleeping in the war because he was without weapons.
You see? But he your soul, Narayan, Shuddhatma, he was totally awake there. And with that awakened state, he was carrying the whole thing. That is how Anand Carriot, do you follow? George Carriot, of 4 horses, of internal dravya karmas, man buddhi chit ahankar, your divine light opening out is the awakened state. It goes on getting, એ બધું ખુલ્લું થતું જશે, જાગૃતિ વધતી જશે. And Shuddhatma, knower, seer, all the time is there. Krishna Bhagavan Paramatma. આ તમારું own state, you see. Gujarati, Anand. This is what understood. તમે લોકો સમજી લીધું? પ્રજ્ઞા સમજી તો? તું તો સમજી ગઈ. તમે બધા ગુજરાતી સમજી લીધું? સાહેબ ચાલશે કે નહીં? તમે સમજાય તો રાતના ખાસ કરજો. હવે કાલે તમને બધાને આજે પહેલી વખત કાલે છે અને પરમ દિવસ ગુરુ પૂર્ણિમા છે. આ કાલે સેકન્ડ ફેઝ ઓફ ધી મૂન વિલ ઓપન આઉટ અને શિવજીનો બીજનો ચંદ્રમા જેવો આખું ખુલ્લું થશે અને તમે પોતે લાઈવ ઓમ લિવિંગ એન્ટિટી ઓમની તમે બધે લાઈવ લે આઉટ થશો. તમે જીવતા જશો. આ બહેનો ખરા ના, એ તો બહેનોને કોઈ થવા જ ના દે. કોઈ આજ સુધી નથી થવા દીધું. બન્યું નથી શાસ્ત્ર. સમજી? શિવજીનું કોઈ દાડો ના બને. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ. કામદમ means relative viewpoint living wise. મોક્ષદમ ચૈવ real viewpoint wise. Omkarai Namo Namah. ऐसा live living form of Om, I Namaskar. Yogi log, I say, they draw the Om and they concentrate on it. But real meaning is this. Do you understand? And you are Yogi. Shuddhatma Yogi. समझी क्या ना बता? बता समझे क्या नहीं? તમે સમજ્યા બધા? મજા આવશે. જોજો મજા આવશે. અંદર જીવવાનું. આ બહાર પેપર નહીં ફોડી દેવાનું બધાએ. પેપર ફોડ્યા વગર અંદરથી without letting out our paper, live paper out, go on living inside. What is wrong in it? What is wrong? Even otherwise in darkness we are getting cheated and we are thinking that, oh, I am getting benefited. What sort of life was that, sir? Sir, what was it? All the time. What is it? Go ahead. Okay? You alright? So tomorrow we meet again for me to know your experience and for me and Shasai and Deepakanandji to explain you these 5 sentences with certain little examples so that more fluently you will follow more. And we will form 3 groups, Hindi, English and Gujarati. So it will be easier. Just now it is very complicated. For me also it was. They were waiting outside. How? It took so long time. I said, what could I do? So tomorrow we will do like that. An hour to hour and a half. What time shall we gather together? Tell me. You can tell any time right from morning or any time. You tell me now. 9 o'clock can fit you? Yes. Early will be difficult for you. No, they have to come for breakfast. 8 o'clock is the breakfast. 9 o'clock is okay? Anand, you are going, no? You will be taken care of by? I entrust to his care. Okay? And Deepakanandji. You want email, etc.
Papa will ask you, of course, but you can tell. Papa, what? Nothing to lose. Dada would be very happy. And we are not to go or anything. No, it's not like that. It is being free, being independent person. What is wrong in it? Right? Dada would be very happy. Gyani is not anybody's boss. And he does not keep anybody under his hand. No. That is not his business. That's why. Being a free, independent person, why should you do that? He makes you free. That's all. That is his business. I earn my indebtedness to get it paid out. That's all. That's my only earning. So, what else? That is my earning. My indebtedness is getting paid out. Through your gracefulness. Is God. You understand? You graceful sir. તમે ઉપકાર કર્યો મારા પર. Anand? Okay? So tomorrow આવી જવાશે? Whosoever who are local cannot come, they can come later also. But those who have to go out, they can come early and take benefit. You can distribute tomorrow and day after, anytime. Locals and outgoing, both ways. Barabar ji? Right? And we'll meet at this place only. And we'll found 3 groups. And there are 3 rooms only. We'll go there like that. As far as possible. Namaskar. Okay, no? નિધિ ધ્યાન Ah, હું કઈ okay.